अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो जिसको नॉलेज गेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आप एक सही जगह पे हो मेरे दोस्त. प्लीज एंजॉय दिस क्लिप. When your ad agency work started, like it was around, like, you said 2010, 11. So, and you started working on which brands at that point of time? So I actually had the good opportunity to work on some amazing brands, dude. Like at the start, of course, when you join, you don't get the cream of the crop. But over time, when I showed good promise, I was dealing with brands like for example, I was dealing with Coca-Cola, their entire portfolio in India. I was handling the digital, social media and creative and digital media duties. So, but imagine, dude, like at 23, 24, working on a brand like Coca-Cola, yaar, दुनिया का the most distributed, the most loved, the most known brand in the world you're World. working. I was also working on Thumbs Up, on Sprite, on basically all the Coca-Cola brands. I got the chance to work on Reckitt Benckiser, which has brands like Dettol, which is the world's most respected brand, I think. And all the other brands, Wheat, Scholl, stuff like that. Then I worked on Micromax, which was my favorite brand, I think. हाँ. पता नहीं आपकी उम्र कितनी है, आपको पता भी नहीं होगा शायद वो ब्रांड क्या है, बट Micromax I knew. एक I टाइम was in 8th standard जब Micromax launch हुआ था. एक टाइम पे वो इंडिया का बेसिकली वाज द चैलेंजर टू सैमसंग इन इंडिया. Yeah. होम ग्रोन cheap smartphones, but very good in productivity, very good phones, but their edge was their marketing. Micromax was built on marketing. And I was a part of that team when, the peak happened. Like I was the part when Micromax, dude, got Hugh Jackman as a endorsement, as a brand ambassador, right? Hugh Jackman, Wolverine, like that kind of stuff. We were doing concerts left, right, and center. We got Snoop Dogg to India. We were sponsoring sunburns, doing rock competitions. The marketing was super cool, and I learned a lot, and I did a lot of things. I had a lot of fun. Made some amazing connections, which will last throughout my life. And again, जो glamour होता है ना advertising का, वो मैंने तब जिया था माइक्रोमैक्स के टाइम पे. बहुत मजा आता है, and I loved my clients and they loved me, hopefully. तो उनमें 3-4 साल उधर काम करा. Then I got the chance to actually work on BJP for elections as well. So 14 वाला. दोनों यार, 2013 में दिल्ली इलेक्शन, 2014 में जनरल इलेक्शंस. तो दोनों पे काम करा मैंने. 2013 वाला हार गए, दिल्ली वाला, तब केजरीवाल जी जीत गए. एंड 2014 में किरण बेदी वाला ना. नहीं, दिस वाज अगेंस्ट आप यार, चीफ मिनिस्टर. हाँ, चीफ मिनिस्टर, बट सामने कौन था? मनोज तिवारी. हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन. Okay. You won't even know that it was not the most successful campaign, and he wasn't. हाँ. I think at that time one of those most star campaigner type नहीं थे, but Dr. Harshvardhan is a very strong individual and a great personality, great politician, and he was actually also the Minister of Health in the first cabinet. So again, so I did that. I worked on 2 elections, had a ball. बहुत मजा आया, बहुत नामी लोगों से मिला, बहुत पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखा, एंड एडवर्टाइजिंग इन पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखा, और बहुत क्रेजी था. हफ्ते नहीं सोते थे, ऑफिस में रातें बिताई कितनी, क्योंकि बहुत काम होता था ड्यूरिंग इलेक्शंस. यू कैन इमेजिन एवरी मिनट इज अ न्यू थिंग. So yeah, man, learned a lot about the electoral process, learned a lot about India, I think, at that time. Yeah, some of these brands, I worked on Fitbit, worked on Royal Enfield, some pretty cool brands, man. I got a chance to work on really cool brands. And after that, I went to Uber, which is, of course, one of the coolest brands ever. Yeah. Once in a generation company. हाँ, मुझे उसके ऊपर वो मतलब like I can ask 10 questions from this only answer, but I just want to know कि जब ये जैसा आपने बोला कि Micromax were doing concerts in India, they were inviting Snoop Dogg, ऐसे वाला. We last year we saw like Zomaland कराया था Zomato ने. कोक का कोक स्टूडियो होता है. So I just want to know what is their thinking behind this kind of thinking, because कोक स्टूडियो से कोक का क्या होगा Zomaland कराने से. So what they are trying to think, and what is the creative strategy behind doing this kind of things? So, like, of course, I can't explain everything to you in like a podcast, but there are multiple facets by why people do this. One is you
are able to have a very captive audience in these things. Okay. People become fans, and when they become fans, they stick with you. There is a natural connection with you. A person who goes and looks forward to Zomaland all the time every year inherently will choose Zomato over Swiggy when they want to order, because unke dimag mein there's a loyalty towards a certain brand. It's a very subliminal thing. That's why by the way, everybody I tell, I meet, I tell that they should read psychology, because psychology helps you understand the concepts of marketing much more. But yeah, so one is that. The other thing is, after a while, what happens is your brand reaches a certain level of awareness. हाँ. उसके ऊपर अवेयरनेस बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं होता. आज की डेट में ऐसा बहुत ही कम लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको जोमेटो नहीं पता होगा, या जिनको कोक नहीं पता होगा, फॉर एग्जाम्पल. तो दैट लेवल यू डोंट वांट टू बिल्ड अवेयरनेस, यू वांट टू बिल्ड कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर जब मुझे कुछ खरीदना है और मेरे सामने दो ऑप्शन है, सॉरी, अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मेरे जहन में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो चीज खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. तो उसके बाद आता है प्रेफरेंस, उसके बाद आता है एक्शन. प्रेफरेंस का मतलब होता है मेरे जहन में मैंने चॉइसेस बना लिए, उन चॉइसेस में से मेरे को क्या प्रेफर मैं करूंगा, और फाइनली जिसको प्रेफर करता हूं उसको जाके खरीद रहा हूं कि नहीं खरीद रहा हूं. ये फनल होता है एक दिमाग का, और मार्केटिंग का भी. तो अब अवेयरनेस तो इतनी हो गई, अब मुझे कंसिडरेशन में आना है. कंसिडरेशन और प्रेफरेंस के लिए आप ऐसी चीजें करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपना ब्रांड जोमेटो नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि सबको पता है जोमेटो क्या है, बट आप दिखा रहे हो कि जोमेटो कितना कूल ब्रांड है, और आपके जैसा नजरिया रखते हैं. कोक कितना कूल है क्योंकि आप म्यूजिक सुनते हो और आपको जैसा म्यूजिक पसंद है वो वैसा म्यूजिक आपको दे रहे हैं. तो अब ओवर टाइम यू बिकम मच मोर लॉयल टू दैट ब्रांड, एंड यू प्रेफर एंड यू कंसिडर दैट ब्रांड ओवर मोर अदर पीपल. थर्ड इज यू बिल्ड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज, एंड इट बिकम्स ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी ओवर टाइम, राइट. आज की डेट में कोक स्टूडियो, आप कोक का नाम तो ले रहे हो, लोगों के जिन्होंने नहीं सुना उनको सुनाई देगा कोक क्या होता है. So things like those become properties for the long term, and long term properties are what survive on advertising and marketing. And it's very difficult to build long term properties, by the way. It's very easy as an advertiser or as a marketer to build a new campaign every time. It's very easy, trust me. What is very difficult is to create one thing that you can repeat forever and still be relevant. And the examples of that is Coke Studio. The example of that is the line "Just Do It," written by Nike. The example of that is Hema Rekha Jaya Sushma Sabki Pasand Nirma. The example of that is the Amul Girl. These are properties long term. आज से 30 साल बाद भी अमूल गर्ल जब अखबार में आएगी तो वो रेलेवेंट होगी. सो वो बहुत मुश्किल होता है यार बनाना. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, इज टू बिल्ड अ प्रॉपर्टी. न्यू एड वेरी इजी. अभी तो मुझको एक ब्रीफ दो, 10 आइडिया मैं आपको बताऊंगा. बहुत इजी होता है. ह्यूमन बीइंग्स आर अट्यून्ड टू डू ideas. If you enjoyed this clip, then please like, share and subscribe. It's free.